Hey guys, this is Vishal and welcome to this live broadcast. Yes, today I want to share something very, very important, very, uh, a big kind of a big list of lessons you can learn from my personal trade, which I did in one of the stock, and I lost 40 lakhs in one trade, right? And I'm going to show you the whole analysis and we'll do a detailed analysis of the stock, will the entry and the exit also, and then we will see that kya mistakes maine ki. So because as it is, I'm going to for my own sake, right? So I have booked that loss. That's the good part about it. So let's share the loss. Is that I know many of people are 30 lakh 50 lakh लॉस भी होता है the screen. Yes, I'm going to share my screen right now. You guys can see me and hear me properly. Sound, voice. Okay, so you can see me right now. So maybe we can Yes. Can you hear me now properly? All good? Yes. All good now? All good. Yes. Thank you so much for the confirmation. Yes. ओके सो फिर से स्वागत करता हूं ये वीडियो में और दिस इज अ इम्पॉर्टेंट वीडियो वेयर आई वांट टू शो यू माय पर्सनल ट्रेड वेयर आई लॉस्ट मनी आई बुक द लॉस एंड व्हाट मिस्टेक्स आई डिड व्हाट मिस्टेक्स आई don't want to repeat. I'll make the journal of that and you also can learn from me. हमें जरूरी नहीं कि सारी गलतियां हमको खुद को करनी चाहिए, हमको दूसरे से भी सीखना चाहिए and that's what this is. All my students, all my community, all my friends who are watching this. So let me show you the trade which I did today in the last few days, and I lost money on that. I booked the loss, and that trade is going to be the Bhel stock, BHEL. Now let me just do an analysis of that from the top. Right, पहले monthly chart को देखते हैं, and monthly chart was showing good momentum, higher bottom, RSI above 40, moving average crossover, but month अभी तक खत्म नहीं हुआ है. So I wanted to build a position on that for a now if you see, this is a contra trade. This is not a trending trade. जैसे all time high वाले trades नहीं है, जैसे DLF और जिंदाल और बैंक निफ्टी है. ये कॉन्ट्रा ट्रेड है. So सबसे पहले वो नोटिस करना है. फिर वीकली चार्ट में 60 क्रॉस हुआ था लास्ट वीक फ्राइडे को, and that is was one more confirmation to take positions. And daily chart पे भी it was a good close on Friday. Now Monday gap down, and that is where I lost money, and today I booked my loss. So let me just show you what all mistakes I did. So first, I had bought, like, on this day, which is an hourly chart, last week 4th and 5th of February, 4,62,000 shares and 5,04,000 shares, 22 और 24 लॉट खरीदे थे मैंने. और दूसरे दिन मंडे को गैप डाउन खुला और नीचे गया, और आज मैंने उसको बुक किया. If you see this, the same analysis I was doing since last few days and few weeks now. And this is my position, Malkan's Training Institute, 4th and 5th. Entry quantity, buy quantity 42.37, 43.22, and aaj almost at the lowest price I booked it
18 lakhs and 20 lakhs, total almost 40 lakhs is my loss now. And because of, and then it went into a ban period also, bhel ban हो गया, तो वो और एक problem. और this was the loss. आज का जो trade है, today morning I booked the whole quantity 9,66,000 at 38.77. And so this is to government to sell stakes in bhel to others. This was the news yesterday, and उसके वजह से gap down हुआ और उसके वजह से प्रॉब्लम हुआ. नाउ द चैलेंज इज कि ये सब होते रहता है. नाउ व्हाट आर द लेसन्स वी हैव लर्न? आर यू गाइस रेडी? दिस इज लाइक वन मोर टाइम दोज हु हैव सीन. दिस इज वेयर आई बॉट एंड दिस इज वेयर आई एडेड मोर क्वांटिटी. अब सबसे पहली गलती क्या हुई कि मैं, आई नो मेनी ऑफ यू माइट लर्न फ्रॉम दिस, इफ आई डू दिस एनालिसिस प्रॉपर्ली. मैंने 2 बार खरीदे, आपने देखा होगा. तो पहले तो मैंने एक ब्रेकआउट पे खरीदा और दूसरा ब्रेकआउट का मैंने लाइन बना के रखा था यहाँ पे, विच यू कैन सी दिस 44 हाफ के ऊपर था, लेकिन फिर भी मैंने उसके पहले ही दूसरा क्वांटिटी भी खरीद लिया. सो इन एंटिसिपेशन, हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन एंटिसिपेटरी ट्रेड्स एंड लॉस्ट मनी? ऐसा लगता है अभी तो हो ही जाएगा ब्रेकआउट, क्योंकि फ्राइडे है, फ्राइडे क्लोजिंग है, वॉल्यूम है, सब अच्छा है. और मैंने जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी लिया था 5 लाख शेयर, वो आई थॉट कि क्रॉस हो ही गया है. मैंने वेट नहीं किया क्रॉस होने का, एंड दैट वाज माय फर्स्ट मिस्टेक of doing anticipation trade. Second mistake, Friday को बड़ा quantity लेके गया. Friday को whenever I generally avoid this doing big quantity on Friday, especially fresh trade at 3:30 because weekend है, कुछ भी हो सकता है, जैसे actually हुआ. So I broke my own rule. दूसरा है कि कितना भी एनालिसिस कर लो, कितना भी सब ठीक ठाक हो जाए, अगर समझो मैंने ट्रेड बराबर से एनालिसिस भी किया था, ब्रेकआउट भी हुआ, वॉल्यूम भी था, आरएसआई भी था, फिर भी ट्रेड गलत हुआ, स्टॉप लॉस हो गया, न्यूज आ गया और लॉस बुक करना पड़ा. सो यू नो दैट इट्स नॉट अ फुल प्रूफ बिजनेस. लाइक यू हैव टू डू, दिस इज अ प्रोबेबिलिटी स्टडी. इट्स नॉट अ साइंस और मैथ्स के 2+2 एवरी टाइम इट विल बिकम 4. यू हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी. लॉस हो सकता है और हुआ, राइट? सो डोंट टेक मार्केट फॉर ग्रांटेड, दैट्स फॉर श्योर कि हाँ अभी तो हो ही जाएगा. मैंने मार्केट को ग्रांटेड लिया, बेल को ग्रांटेड लिया और एक्स्ट्रा क्वांटिटी पहले ही ले लिया और उसकी वजह से एक्स्ट्रा लॉस हो गया, right? I could have done with 15-20 lakh loss, but I lost 40 lakhs just because I did an anticipatory thing. Now the other thing is, even if it was a good trade, you need to understand कि stop loss रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे आप सब सिस्टम को फॉलो करते हो, आप सब रूल्स को फॉलो करते हो. जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, आपने सीट बेल्ट पहना है, आप सीधे लाइन में ही चल रहे हो, आप कोई स्पीड लिमिट नहीं है, आप कोई सिग्नल को जंप नहीं कर रहे हो, लेकिन बाजू वाला रैश ड्राइविंग करके ठोक देगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हो. इसलिए इंश्योरेंस निकालना जरूरी है. एंड द सेम वे आप सारे सिस्टम्स को बराबर से फॉलो करोगे, एनालिसिस बराबर से करोगे, ट्रेड भी, एंट्री भी बराबर करोगे, रिस्क मैनेजमेंट भी करोगे, सब सही जाएगा. लेकिन मार्केट में कुछ न्यूज आ गया, कुछ इवेंट हो गया और गैप डाउन खुला, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो. दैट्स पार्ट ऑफ like a losing trade. Now I want to give you one important distinction. One important distinction is there are 2 kinds of trade. One is the losing trade and one is the bad trade. Losing trade, bad trade में फर्क क्या है? जो मैंने पहला क्वांटिटी लिया था वो लूजिंग ट्रेड था, क्योंकि मैंने सब बराबर क्वांटिटी लिया था, सब बराबर था और फिर भी स्टॉप लॉस हो गया. सो इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, लूजिंग ट्रेड. बट जो दूसरा क्वांटिटी लिया था, दैट वाज अ बैड ट्रेड, क्योंकि वो लेना ही नहीं चाहिए था और फिर भी मैंने एंटिसिपेशन में लिया और उसके ऊपर लॉस हुआ. दैट्स माय बैड ट्रेड. सो लूजिंग ट्रेड्स आर ओके, आपके लाइफ में होगा ही होगा, लेकिन बैड ट्रेड्स को अवॉइड करना है, बिल्कुल अवॉइड करना है, right? So avoid all the bad trades as much, मतलब anticipation, over trading, impulsive trading, focusing not on the process but on the profit, all that which you have to do. Then cutting the loss. अब जब कल गैप डाउन खुला, ये जब नीचे गैप डाउन खुला, तो पहले मेरे दिमाग में क्या कि हाँ भेल में लॉस हो रहा है, लेकिन सामने मेरा 3 पोजीशन और है, उसमें प्रॉफिट हो रहा है. यूजुअली व्हाट पीपल डू, दे बुक द प्रॉफिटिंग ट्रेड्स. वो गलती मैंने नहीं की कि वो प्रॉफिट वाले ट्रेड्स को निकाल दूं और लॉस वाले को खड़ा रखूं. आई एग्जिटेड द लूजिंग पोजीशन, माय प्रॉफिटेबल ट्रेड्स आर स्टिल होल्डिंग. वो जब वो ट्रेड खत्म हो जाएगा तो उसका भी डिस्कशन बाद में करेंगे. आई हैव दिस माइंडसेट कि जब ट्रेड चालू हो तभी नहीं दिखाना चाहिए. ऐसा ही फॉर व्हाटएवर फेथ, व्हाट you want to finish the trade and do it, right? जब वो ट्रेड खत्म होगा तो उसका भी जो भी प्रॉफिट लॉस है वो भी we can discuss that. But don't book your loser, don't book your winners, cut the losers. मैंने पहले भेल को काट दिया. आज मेरा जैसे आवरली 40 के नीचे गया, so when it gapped down yesterday I didn't book it. मैंने बोला और एक चांस देते, क्योंकि वॉल्यूम इतना बड़ा नहीं हो रहा है सेलिंग पे.
फिर भी मैंने बोला आवरली 40 ब्रेक हो गया, मतलब निकलना तो पड़ेगा ही, और इट जस्ट क्लोज बिलो आवरली 40 एंड दैट वाज अराउंड 61% also. Now that's the end of the trade. So cutting the loss, losing trade is important versus the winning trade. And now अभी हो गया है, अभी इसके बारे में मैं रो रो के या टेंशन ले लेके बीमार होके रात को नींद नहीं आके, नाउ आई हैव टू थिंक दैट हाउ डज दिस ट्रेड डज नॉट अफेक्ट माय अदर ट्रेड्स. अदर पोजीशंस आर आल्सो सेज यू हैव टू राइट डाउन, जर्नल कर लोगे, you accept that, digest that and say ये गलती फिर से नहीं करेंगे, ये गलती हुआ था, ये सही था, ये गलत था, right? The first quantity was right but the second quantity was wrong, so I will not do that mistake again and now I have to move to the next trade. But if I put so much energy and focus into this trade, अगर यही ट्रेड के बारे में मैं सोचता रहूं, बात करते रहूं दिमाग में, तो मेरा दूसरा ट्रेड भी बिगड़ेगा जहां से मैं लॉस कवर कर सकता हूं. So all these are lessons you need to learn. Every trade teaches you a lot of lessons, right? Don't miss out on those trades, or don't put up too much energy behind each and every trade which you are doing, right? So that is where I want to share this. I hope you are learning from this, all this lessons which I am learning, क्योंकि आपके लाइफ में भी ऐसे ट्रेड होंगे, मेरे लाइफ में भी बहुत हुए, बहुत ब्लंडर्स हुए, और खाली एक ही चीज है कि जब मिस्टेक हो जाए तो उसको पहले कट कर लो, या तो उंगली काटो या तो हाथ काटना पड़ेगा. अब क्या मालूम कि करॉल 10% नीचे चला जाए, तो मैंने उसको बुक कर दिया. अब चाहे मुझे जो चाहिए था उससे ज्यादा लॉस हो चुका है, सो नाउ व्हाट कैन आई डू? नथिंग. सो व्हाट आई हैव टू डू इज जस्ट लेट गो दैट एंड फोकस ऑन हाउ आई कैन रिकवर दैट. और दूसरा, नाउ मोस्ट कॉमन चैलेंज पीपल आर फेसिंग इज आफ्टर द लूजिंग ट्रेड दे टेक रिवेंज, कि ये 40 लाख अभी मेरे को कल का कल कवर करने का है, तो मैं दूसरे 2 ट्रेड कर दूंगा, और उसके चक्कर में और 40 लाख जा सकता है. Take a deep breath, take a breather. Market कहीं भाग नहीं रहा है. You can take a break for a week, for a day, for a month also, and then come back. क्योंकि जब emotions are high, अभी आप जब लॉस होता है तो emotions high हो जाते हैं, and when emotions are high, intelligence goes down, right? So आपकी सोचने की शक्ति, और वो भी intelligently, goes down when you're emotional about it, right? So I am not taking fresh trades. मेरी जो positions है उसको maintain कर रहा हूँ. सामने लॉस वाले को बुक कर दिया, सामने मुझे और 2 स्टॉक अच्छे लग रहे हैं, लेकिन मेरे को पहले भेल का लॉस हजम हो जाने दो, भेल पूरी अंदर जाने दो, एंड उसके बाद नया पोजीशन लेंगे. बट इफ आई टेक रिवेंज, नहीं ये 40 निकालना है कल का कल, then I might do another trade which can be a big mistake. I hope if you are learning from this, make sure you put some comments that okay, you have done the same mistake in the comment section. Even if you watch this video later, let me know about this. This is very important. You need to do postmortem, कि कहां गलती हुई, कहां सही गए, कहां गड़बड़ हो सकता है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है, and all that stuff, right? So this some of the lessons. So let's say, और दूसरा, ये मेरा contra trade था. I generally take less positions in contra trade and more positions in trending stocks, but contra trade में मैंने ज्यादा position ले ली. That's another mistake, right? So if I have to list down all the mistake, anticipation trade नहीं करना है, right? दूसरा, don't take market for granted. तीसरा, ब्रेकआउट के नजदीक कुछ बाय नहीं करना है. चौथा, कटिंग द लूजर वर्सेस द विनर. पहले लॉस वाले को कट करो, प्रॉफिट वाले बाद में देखेंगे. डोंट टेक रिवेंज, take a break or take a breather after the loss and then go to the next trade. It should not affect you mentally, right? Don't put so much energy into one single trade. It's market kahin bhag nahi raha hai, right? And that's more or less. And do your analysis, do your homework, and then move to the next trade, next system, right? Focus on the process, not on the profit, right? So I know many of you must be going through the same challenges, and this can happen. You just focus what goes right? So this was my trade and this was my analysis. I went wrong and I do go wrong on many trades, and that's okay. We'll cover up in the next talk. We'll see how we can make out on that, right? So did you like this session? What did you learn from this? Yes, similar thing happened to me also. Thanks for sharing. Yes, avoid bad trade. Yeah, losing trade versus bad trade. ये बहुत important है. समझ लो, हर एक ट्रेड के बाद एनालिसिस करो, जर्नल में डालो और बताओ कि ये लूजिंग ट्रेड था या बैड ट्रेड था, राइट? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर यू शेयर दिस वीडियो. सारे प्रॉफिट वाले ट्रेड तो सब लोग शेयर करते हैं, लूजिंग वाला ट्रेड बहुत कम लोग करते हैं. सो मेक श्योर यू शेयर दिस वीडियो सो दैट others also can learn from this, all the mistakes, right? And
हम लोग, we are all human beings, right? We all make mistakes. The only thing is that after you make the mistake, first you accept that it was a mistake, second you learn the lesson from the mistake, and third that make sure you don't repeat the mistake. ऐसा कोई रोबोट की तरह ट्रेड नहीं होगा कि सिस्टम से ट्रेड करो, इधर ही बाय करोगे, इधर ही सेल करोगे, बिकॉज ऑल वी आर ऑल इमोशनल पीपल, वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स. देयर विल बी मिस्टेक्स इन द मार्केट, बट मेक श्योर यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर मिस्टेक्स. नाउ आई एम नॉट ब्लेमिंग गवर्नमेंट और एनी न्यूज चैनल के ऐसा न्यूज क्यों आ गया, उसके वजह से मेरा लॉस हो गया. आई एम टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई लॉस. मेरा लॉस मेरे वजह से हुआ, मैंने एनालिसिस किया था, मैंने शायद ज्यादा क्वांटिटी ले लिया था, मैंने शायद प्रॉफिट लॉस बुक करने में भी एक आध रुपए ज्यादा रुक गया और आवरली चेक कर रहा था एंड ऑल दैट इज माय मिस्टेक. नथिंग रॉन्ग विद द मार्केट, नथिंग रॉन्ग विद द गवर्नमेंट, नथिंग रॉन्ग विद द कंपनी, right? Use this as your responsibility. Make sure you take full advantage of this lessons which I learned. I hope you like this video and you will learn the lesson and avoid those blunders and mistakes in your account. So thank you so much for joining today. I hope you had a great day. I'll see you again. We are soon trying to make a new launch of Tuesday Technical Talk is going to come back very soon. We are launching new shows and new videos on YouTube and Facebook very, very soon. Just hold on to it for the next few days, right? If you are interested to join the next 1-year program, which has already started, go to malkanwebinar.com and check out the videos. खाली वहां पे जाके लॉग इन करके 3-4 वीडियो है, वो देख लो, उसमें से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, even if you don't join the 1-year program, right? Thank you so much. Good luck and good trading. See you soon in the next video.